Assalamu alaikum. Okay, I'm explaining to you in this video the subarachnoid cisterns that are present in brain, or I say that are present in your head between in the skull. So what happens actually? What are the cisterns? हमारे पास we know कि between the arachnoid matter and the pia matter we have the cerebrospinal fluid in subarachnoid space. Here we have the arachnoid matter and here we have the pia matter. Between these two substances we have the subarachnoid space which contains the CSF like this. Now whole of the brain is covered by meninges and whole of the brain also contains CSF around it. At some places most of the arachnoid and pia matter they have uniform area between them like this, they continue, but at some area their distance between the arachnoid and pia matter is increased like this. Where distance between these two is increased, large amount of CSF is accumulated between the layers. After that the distance again becomes normal and the normality continues. At certain places where distance between arachnoid and pia matter is greatly increased, we have large amount of CSF accumulation in it. That area is known as a cistern. And subarachnoid, because we know that CSF is present in subarachnoid space just below the arachnoid and above the pia mater. That's why these cisterns are called subarachnoid cisterns. Now we have four cisterns or four subarachnoid cisterns in our brain. Number one, first of all we have the that is known as cerebellomedullary cistern. Cerebellomedullary cistern, I'll also show you the picture, but first of all I'll give you the concept of where are the cisterns present and what are their CSF drainage areas. First of all, the cerebellomedullary cistern, I told you. Cerebellomedullary, name is showing below cerebellum and behind the medulla oblongata. On the posterior part of the brain, just below cerebellum and in posterior to the medulla oblongata, we have the cerebellomedullary cistern. Now cerebellomedullary cistern has a large amount of CSF accumulation and majorly the CSF comes from it from median aperture. What are apertures and what is the foramen of Megandia? I'll explain you in a separate video because it's a full-fledged lecture on it, so I can't explain you here. Just remember that cerebellomedullary cistern, which is behind below cerebellum and behind medulla, cerebellomedullary, drains for most of the CSF from median aperture. Just remember this thing, median aperture. And what are the veins which drain into it, or what are the structures which are along with it or below it or something like that? The structures are the vertebral arteries and also along with vertebral artery we have some of the branches of it, so they will be long names. Just remember that cerebellomedullary cistern, which is just below the medulla behind pons, it contains the vertebral arteries and it mainly receives the CSF from median aperture. Now the second cistern, first is the cerebellomedullary, second is called the Pontine Cistern. Pontine Cistern, where it is present, we know that there is an area known as clivus, which is the sloping area and it leads to the foramen magnum. Just at that area on the clivus and in front of the medulla and pons, because we know that through this foramen magnum medulla and pons known as brainstem is passing through and later on it will become the spinal cord. So on this clivus in front of the medulla and pons we have another cistern or another dilatation of the subarachnoid space containing large amount of CSF known as Pontine Cistern. Pontine Cistern mainly receives the CSF from lateral apertures. Aperture मैं आपको explain कर दूंगी अलग वीडियो में, बस आपने याद रखना है कि जो cerebellomedullary है मीडियन अपर्चर से रिसीव करता है, जो पोंटाइन सिस्टर्न है वो लैटरल अपर्चर से रिसीव करता है. और इससे रिलेटेड कौन से स्ट्रक्चर्स हैं याद रखना आपने, आपको मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया कि वी हैव अ बेसिलर प्लेक्सिस ऑफ वेन्स ओवर द क्लाइवस, सो अ बेसिलर आर्टरी, because wherever a vein is present an artery is also present. Basilar artery is present near the Pontine cistern and 5 to 12 cranial nerves. Total 12 cranial nerve pairs होते हैं we have, and 5th to 12 cranial nerves are present with this Pontine cistern. You must remember this. After the Pontine cistern, the third cistern which we will have is the Interpeduncular Cistern. Interpeduncular Cistern. Now what is its location? We know that I told you about an area known as diaphragma sella, which is over the body of sphenoid. We know body of sphenoid मैंने आपको बताई थी,
ऐसे करके सपोज यहाँ पर दरमियान में बॉडी ऑफ स्फीनॉइड है जिसके आगे ट्यूबरकुलम सेले है, दरमियान में हाइपोफिसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए फॉसा है और पीछे जो है वो डॉर्सम सेले है। इस सारे को कवर किया होता है डायफ्राग्मा सेले ने, और इसके ऊपर एग्जैक्टली पड़ा हुआ होता है स्ट्रक्चर ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं ब्रेन का जी मिड ब्रेन का पार्ट होता है। उस इसके ऊपर पड़ा हुआ मिड ब्रेन का पार्ट और इस सारे के बीच में वी हैव अ सिस्टर्न विच इज़ नॉन एज इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न। ठीक हो गया। अब मैं कहूँगा इसका रूफ किसने बनाया हुआ, रूफ यानी छत, तो छत बनाई हुई है ब्रेन के पार्ट ने। अगर आप इतना भी कह दें कि मिड ब्रेन का पार्ट है जिसने इसकी छत बनाई हुई है, ये रूफ बनाया हुआ है, इट्स ओके। और इसका जो फ्लोर सारा बन रहा है, इट इज़ फाउंड बाय दिस ट्यूबरकुलम सेले, देन पिट्यूटरी फॉसा एंड देन डॉर्सम सेले, एंड इन सारों को कवर किया हुआ होता है डायफ्राग्मा सेले ने। सारी कहानी मैं पहले बता चुकी हूँ। सो अगर आप ये कह दें कि इसका जो फ्लोर है वो डायफ्राग्मा सेले ने बनाया हुआ है और इसकी छत जो है वो ब्रेन के मिड ब्रेन के पार्ट ने बनाई हुई है, और इन दोनों के दरमियान में वी हैव अ सिस्टर्न नॉन एज इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न। इट्स मोर देन इनफ। इट्स इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न के अब से रिलेटेड इससे क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें भी बेजिलर आर्टरी और उसकी पोस्टीरियर ब्रांच, इसके अलावा थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व्स, उसमें बेजिलर आर्टरी थी और उसकी लेब्रेंथाइन ब्रांच थी, फिफ्थ एंड ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व्स, फिफ्थ टू ट्वेल्थ, और इसमें बेजिलर आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच एंड थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगी। आखिरी एक सिस्टर्न रह गया हमारे पास, दैट सिस्टर्न इज नॉन एज कियास्मेटिक सिस्टर्न। भी एक एरिया है हमारे पास जहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स आपस में क्रॉस करती हैं, उसको ऑप्टिक कियास्मा का एरिया कहते हैं। वो भी मैं आपको, अगर नहीं किसी को पता तो अलग वीडियो में बता दूंगी, पूछ लें। तो ऑप्टिक कियास्मा के एरिया में एक जगह होती है जहाँ पर पाया मैटर रेक्टाइल मैटर के बीच में एरिया इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पर एक सिस्टर्न बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कियास्मेटिक सिस्टर्न। तो उसको हम ये कह देते हैं। उसकी कोई खास ड्रेनेज एरिया, कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं है। अब मैं आपको पिक्चर में ये जल्दी से दिखा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। नाउ सी, रुक जाओ मोबाइल, ओके। नाउ सी, पहला मैंने आपको बताया था ये वाला सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टर्न, बिहाइंड सेरिबेलम एंड बिलो सेरिबेलम एंड बिहाइंड मेडुला सेरिबेलोमेडुलरी सिस्टर्न, ये डायलिटेशन। फिर नॉर्मल हो गया सारा, नॉर्मल 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 रहा, फिर डायलिटेशन आई। ये कौन सा है जी, सुपीरियर सिस्टर्न। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया था। आगे आ जाते हैं, एक और डायलिटेशन आई, पोंटाइन सिस्टर्न। क्लाइवस के एरिया में जस्ट इन फ्रंट ऑफ मेडुला एंड पोन्स वी हैव पोंटाइन सिस्टर्न। अगला आ गया इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न, कहाँ पर, ये नीचे आपका आ गया डायफ्राग्मा सेले, इसकी जो उसने फ्लोर बना दिया, ऊपर रूफ बना दिया मिड ब्रेन के पार्ट ने, यह आ गया आपका इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न। लास्ट वन इज द कियास्मेटिक सिस्टर्न, ऑप्टिकल नर्व का कियाज्म जहाँ पर हो रहा है, कियास्मेटिक सिस्टर्न। सो दीज आर योर सिस्टर्न्स। बहुत आसानी से समझ आ गया। अगर आपको कोई क्वेरी है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। थैंक यू।